I have never enjoyed promotional interviews as much as this. You can be sure this is going to be cut into a reel and on his account all the time. बोलती थी लो बजट, एक होता नो बजट. This is too much. No. गाड़ी चलाओ. बोला अरे लेकिन पैसा मेरे पास है, और गाड़ी चलाओ. बोला नहीं सर, रुक जाओ ड्राइवर, रुक जाओ. फिल्म करियर वो स्टक, हाँ. कुछ नहीं हो रहा था. लास्ट फिल्म मेरी शायद थी फ्रीकी चक्रा या जिसमें ऐसा कुछ समथिंग स्मॉल लाइक दैट. So simple dialogue. अच्छा ये जो फलाना प्लॉट अपना असल मतलब अपना है, अच्छा आपका है तो ले लो. That is the dialogue that defines Khurana and the film. Correct. What this film has also given us a relationship for lifetime. ऐसा बहुत कम फिल्मों में होता है. I don't think, be very honest, and he'll admit it कि खेर साहब was not convinced. नहीं, he said nothing against you as an actor, लेकिन खुराना को बाबाजी को क्यों ले रहे हो, पारसी को क्यों ले रहे हो? प्रिपेयर होके अनुपम खेर से कौन टाइगर यार, तो मैं चल के गया ऐसा खुराना की स्टाइल में, और सामने से दिवाकर चलते आया. दिवाकर ऐसे दिवाकर और ऐसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहा था कि मैं खुराना इज हियर. He just didn't look at me, ऐसे चलेगा. पहला सीन मुझे भूलता नहीं है, जो आप आए मैं टूथब्रश वाला. तू ब्रश भी कर रहा है, तूने लाइनें भी याद रखनी है, तूने इधर भी देखना है. कहाँ कम मिलते हैं हम, 2 दिन में आपका. नहीं आप और मैं नहीं, मैं बाकियों के बारे में बात कर रहा हूँ. Every other day he wants to come home यार. इनके यहाँ वर्ल्ड का बेस्ट खाना मिलता है. इनकी मेजबानी जो इनकी वाइफ है, हमारी बड़ी अच्छी मित्र है, वो मुझे बुलाती हैं. वो भी 2 दिन में मिलते नहीं. हाँ, बीवी भी 2 दिन में मिलती है. हाँ. देखिए ये ऐसे ही केओस है जो 18 साल पहले भी हुआ होगा, केओस आज भी हो रहा है. अनुपम सर, ये केओस 18 साल पहले भी था. हाँ, chaos is most beautiful. chaos is creative. जहाँ सब स्मूथ हो, ओके, वहाँ क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती है. chaos ही तो लोगों को जोड़ता है, लोगों के प्यार बढ़ाता है, साफ सुथरा. आपकी जिंदगी कितनी chaotic है? बहुत केओटिक है सर, है ना? बहुत. फिर कभी और आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतने केओस में मैं जीता हूँ सर. पर आप लोग कभी केओटिक लगते ही नहीं हो. मैंने लगते हो कि यार शांत हो, मजेदार हो, एंजॉय करते हो लाइफ. सर 18 साल पहले सब लोग जब पहली बार सेट पे आए थे, कुछ याद है आपको अच्छी तरीके से कि नहीं? हाँ, हमने रिहर्सल की थी, रीडिंग्स की थी, तब हम मिले थे, एक दूसरे से जानते थे, और कैरेक्टर्स इतने अच्छे थे. पहले मोहब्बत कैरेक्टर्स से हुई, फिर उसके बाद एक्टर्स से हुई. मेरे ख्याल से अपने अनजाने में मैं अच्छी बात कह गया. अनजाने में. अरे आप ही बता देना बाकी की बात. केओस में हो गया. बहुत अच्छा बोला. हाँ, मुझे लगा कि ये कितने इंटरेस्टिंग, कितने लाइव कैरेक्टर हैं, कितने रियल कैरेक्टर्स हैं. बेटे का कैरेक्टर हो या खुराना साहब का कैरेक्टर हो या बीवी का कैरेक्टर हो, सब जिंदा थे, उसमें से स्क्रिप्ट से निकल आए. और फिर अच्छा बोनस ये था कि लोग भी अच्छे थे. लोग इतने अच्छे थे कि 18 साल के बाद ऐसी अच्छी दोस्ती है हम सबकी कि हम बेशक कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई है. कहाँ कम मिलते हैं हम, 2 दिन में आपका. नहीं आप और मैं नहीं, मैं बाकियों के बारे में बात कर रहा हूँ. Every other day he wants to come home यार. तो अच्छी बात है ना. क्या आप इतना कंजूस क्यों बन रहे हो मोहम्मद साहब? आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में लाखों कमाते हो सर. आप I have no problem, but he say हम कम मिलते. कहाँ कम मिलते आप? आप और मैं नाश्ते पे आ रहा हूँ, मैं डिनर पे आ रहा हूँ, मैं लंच पे आ रहा हूँ. 2 दिन की बात. ड्रिंक पे नहीं आते क्या सर? अभी वो सब बोल नहीं सकते ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे बारे में. कुछ नहीं, बट इनके यहाँ वर्ल्ड का बेस्ट खाना मिलता है. इनकी मेजबानी जो इनकी वाइफ है, हमारी बड़ी अच्छी मित्र है, वो मुझे बुलाती हैं. वो भी 2 दिन में मिलते नहीं. हाँ, बीवी भी 2 दिन में मिलती है. हाँ, नहीं अच्छी बात है. मेरा कहने का मतलब पहले दिन में है आप किसके साथ मिलते हो मैं मोहम्मद सर? देखो, You're इनको very naughty बहुत boy. कम मिलता हूँ, मैं तारा को बहुत कम मिलता हूँ, किरण जी को बहुत कम मिलता हूँ, बट इनको भी मिलता रहता हूँ. इनके साथ काम वाम भी करता रहता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं. मेरे टीचर हैं ये. मेरा फर्स्ट डे मुझे बिल्कुल बताइए आप. बिकॉज मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं बॉम्बे का पारसी, बनना है खुराना. He said no 2 times. हम इनके पीछे पड़े रहे. I said no, मुझे नहीं होगा ये. फिर मैं बोला नहीं, चैलेंज लेना जरूरी है, और मैं बोला मैं करूंगा, सीखूंगा. बहुत मैंने प्रैक्टिस किया. I don't think, be very honest, and he'll admit it कि खेर साहब was not convinced. नहीं, he said nothing against you as an actor, लेकिन
खुराना Excuse actor. बट खुराना को बाबाजी को क्यों ले रहे हो, पारसी को क्यों ले रहे हो? आई एम श्योर ही मस्ट हैव थॉट अबाउट। तो हम लोग का एक छोटा सा रूम था, वो जो बंगले में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वही था बंगला। वही बंगला था, वो वैन था, वो सेट था, वो सब कुछ था, रूम ही सब चीज रूम था। ही सब कुछ Farm house था। था, उसमें सर। कैमरा भी वहीं पे रहता था, इक्विपमेंट लाइटिंग सभी वही रूम में रहता था। तो खोसला साहब अपना खेर साहब सोए, मैं बैकलाइट में आया, जैसे कि गुरुदत्त साहब की फिल्म में ऐसे मैं एंट्री मारा बैकलाइट में, और मैं डरा हुआ था कि ये खेर साहब बोले नहीं यार ये किसको लेके आया है तुम लोग, किसको लेके आए बाबाजी को। तो बोला मिस्टर खेर कौन? मिस्टर खेर मैं कौन? मैं सर मैं अरे बम्मर पहचाना नहीं मैंने। एंड आई सेड ओके आई थिंक आई गॉट He's human. No, he said I did not recognize you Against in the the- खुराना आउटफिट। बाल वैसे काटे थे, कपड़े ऐसे मतलब खतरनाक कपड़े पहने थे, सविता जी ने दिलवाए थे कपड़े। And he immediately got up, he hugged me and he said, "You're on," and it made me feel better. मुझे बिल्कुल याद है, हम लोग गए थे, फिर चलो रिहर्स करते, तुरंत रिहर्स, मैं नींद में से उठ के रिहर्स करना शुरू कर दिया। रिहर्सल शुरू किया और बोला देख ऐसे ही करना, अभी कैमरा ऑन होगा तो तू बेटर को बेस्ट बनाने की कोशिश मत करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। बेस्ट एडवाइस। He had come absolutely prepared. बहुत तैयारी करके आए थे और आई डोंट सी एनी। मैं बीच में सुना था मैंने कि किसी और को ले रहे थे, किसी को और को ले रहे थे, इनसे बेटर खुराना कोई हो ही नहीं सकता था। बिकॉज खुराना एक्सटीरियर समवेयर, आई डोंट नो, नाउ आई कैन लुक एट इट, खुराना's exterior is frightening but interior is soft somewhere, है ना, उसमें काइंडनेस। मेरा भी वही है। हाँ वही आप नहीं, आपको तो एक्सटीरियर भी वो नहीं है। Soft है। नहीं, पर आपका एक्सटीरियर तो चुम्मा है सर, ऐसे आप हार्ड नहीं हो, आप चुम्मा हो आउटसाइड में। वही he's saying something else. सर ये प्रोडिजी जो आपका था वो बहुत बिगड़ चुका है सर। बहुत बहुत बिगड़ चुका है। ये तो हम ये ऐसे ही थे, हमने जो 50 साल हमने सविता जी की छत्र छाया में गुजारे थे, 50 साल नहीं 50 दिन, 50 साल लगते थे, 50 साल लगे थे। वो ऐसे ही गुजारे थे हमने, हंसते खेलते, और कोई रास्ता नहीं। आप लोगों ने बहुत गलत पसीना बात करी। बहाते हाँ। खेलते खेलते पसीना बहाते। पंखे तो होंगे ना उस इतने टाइम पसीने पे। बहाए। एक पेड़ के नीचे खड़े रहते हम लोग। हाँ। एक डाल थी वो पेड़ के नीचे और एक ही शैडो आता था, एक ही शैडो आता था। तो ऐसे हम लोग ऐसे खड़े रहते पेड़ के नीचे, और जब सूरज ऊपर आता तो शैडो ऐसे कम होते जाता था, हम लोग ऐसे चिपक कसम से। मैं और मेरा पहला शॉट, थोड़ा मैं डोमिनेट कर रहा हूं। चलिए सर। अरे आप यहाँ चलिए। सर you're not चुम्मा सर। तो मैं प्रिपेयर होके अनुपम कैसे कौन टाइगर यार, तो मैं चल के गया ऐसा खुराना की स्टाइल में, और सामने से दिवाकर चलते आया, दिवाकर ऐसे दिवाकर और ऐसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहा था कि मैं खुराना इज हियर। He just didn't look at me, ऐसे चले गए। बोले यार अजीब इंसान है। Then I came to know his mother-in-law had passed away. So we had to forgive him. But immediately he called for a meeting and said, Stop. no, we don't have to go back anywhere. बैठे रहो यहाँ पे, साथ में रहना, साथ में खाना खाएंगे, साथ में गेम्स खेलेंगे, साथ में बातें करेंगे. Don't Get scattered, हाँ. Don't get scattered. You used a Hindi word. हाँ, बिखर ना जाए. बिखरना जाए. I remember that. So daddy was a true daddy. Yeah. He kept us together. No, he Yes. really did. We played so many games. इससे अच्छा मुझे लगता है इंटरव्यू हो ही नहीं सकता. आप कमाल बोल रहे हो इस कमाल समय, बोल हाँ? रहे हो. बाकी लोग चुप हो जाओ. ये तारा भी बहुत अच्छी बात कह रही थी, बताइए. हाँ, मुझे याद है इनको एक दिन हमने बड़ा सिंपल सा कुर्ता पजामा लाइक बिकॉज खोसला साहब थे ये बजट भी नहीं पहन देना के तो नहीं इसके लिए सिंपल देना पड़ता है. आगे बोलिए. पहन के बाहर निकले. बोले, इस रूप में कोई मुझे देखे तो कोई गर्लफ्रेंड में कोई लड़की मुझे दिखेगी भी नहीं, सोचेगी मैं मेरी उम्र क्या है. तो कौन से रूप सर में आप कोई गर्लफ्रेंड्स के बारे में उस समय सोचे थे, आप तो शादीशुदा थे ना सर. नहीं मैं अनुपम उनकी की बात बात कर हो रही मेरी बात कर. अच्छा, आपकी बात कर रहे हैं क्या? ठीक है सर. मैं तो बचपन से शादीशुदा हूँ भाई.
But to be honest, there was definitely great bonding and all, which was truly from the heart. But it was also because very low budget film that we were all, you know, all in one thrown room. together That in all one made room. it There was so no choice. Special. All in one room. And that's what made it so special. Ah. Like we've been saying all Yeah. through the day to day, the struggle is actually what also bonded us so much. Correct. And now that we meet 18 years later, everyone is just the same. We So are we're all meeting 18 years set later, to- no? We are meeting 2 days. I have not met you after 18 I'm days. joking. तो अनुपम सर सिर्फ आप ही के घर आते हैं, आप उनके घर नहीं जाते क्या? नहीं नहीं, मेरे घर नहीं जाते, मेरे घर पे नहीं जाते, इनके घर पे खाना बेटर है, आओ भगत बेटर है, मेरे यहाँ दिल है, हाँ, इनके यहाँ भी दिल है। नहीं नहीं, वो अलग बात है, खोसला पे आते हैं। दोस्त लोग- ठीक है। एक आप बोलती थी लो बजट, एक होता नो बजट। This is too much. No, we are joking. आपने सुना नहीं होगा, मैम बीच में बोल रही थी, एक स्लाइड कर दिया, मैम ने बोला कि फार्म हाउस में हम शूट कर रहे थे, आपने बताया नहीं फार्म हाउस, इतना बड़ा फार्म हाउस हाँ, शूट करेंगे। फार्म हाउस ही तो था। अच्छा, रणबीर प्लीज, कैसे भाई? I wish That I had was a brought the farmer's album. I have an album of photos. There were no Yeah. phones. There was no digital. There was no people scrolling. ये photo I have खींचती those रहती थी। photos. अगर इनका फार्म हाउस दिख जाता तो शायद हम लोग और पैसे मेरा मांग नहीं लेते। था, मेरा नहीं था, hired था। farmhouse was Khurana's place. Khurana's but place. primarily the film is shot in Khosla House, which is Yes. And which remember was the not a lady farmhouse. who owned the His house? was a farm Remember house. the lady? She was always there. Yeah. हाँ, And her daughter. they used to fight a lot. मैंने एक बड़ा सा फार्म जहाँ पर आप सुसु हाँ। करने चले जाते हाँ, हो, वो वाला। मेरे को मिल के, है ना? हाँ, मैं एक और किस्सा सुना। आप सुनाओ। हाँ सर बता रहे हैं। किसी ने आके डायरेक्टर के कान में बोला कि एक ही रील बचा है। मतलब वो हाँ, फिल्म रील, फिल्म रील ना, रील एक ही रील बचा है। डब्बा। तो लास्ट जो सीन है, नवीन जी को मतलब शराब पी के नवीन जी को गाड़ी में बिठा के हमको पैसे देने, हाँ, पैसे देने, तो केस मेरे हाथ में, और both of them, even the secretary बेचारा is no not more. there. Really? Oh yeah, yeah, Naveen is still in. And the secretary is no more. तो दिवाकर said कि you इधर से वहां तक जाना, जो भी बोलना है बोल देना वहां तक. So we are going, and Naveen ji sat in the car. He was not well. Sat in the car. गाड़ी चलाओ. बोला अरे लेकिन पैसा मेरे पास है, और गाड़ी चलाओ. बोला नहीं सर, रुक जाओ ड्राइवर, रुक जाओ. I don't know. And then I gave it to the अच्छा वो by mistake रह गया? He just sat. He was very agitated. 5 in the morning. He was not well. He had asthma. हाँ. दिल्ली में smog था, fog था, सब कुछ था. तो he's saying नहीं मुझे नहीं, ऐसे गाड़ी चलाओ. So I said लेकिन बैग का क्या, पैसे नहीं. तो सेक्रेटरी इधर आ, ये ले, तू आए रिप्रेजेंट, वो सब. And then finally कैमरामैन एंड दिवाकर इज सेइंग गो ऑन. तो क्या करूं मैं, बोला टॉयलेट में हो गया. That was classic shot. Because there were no cuts in that, ना, एक ही कैमरा रोल में था. किरण जी, आपके कुछ ऐसे किस्से हैं कि नहीं? नहीं, ये सब किससे सुना रहे हैं. We were all a part of it. बैठते थे, ये सब गप्पे होती थी. But it's real fun. I think Fun, there's a yeah. lot of closeness which comes because of this, you know, being thrown together. Otherwise क्या आज के टाइम में everybody is in their own vans. Right. There is no connectivity. आप शॉट देते हो, हर कोई अपने अपने रूम में चला जाता है. But here it was not like that. We were all together. It was real fun. It's so true. Yes, it was real fun. We sweated it out, believe me. मई का महीना दिल्ली में, आप सोच लीजिए, और लाइट चली जाती है कई बार. So you imagine how hot. लाइट भी जाती थी, yes, yes. Yeah, light would go. It's a Delhi thing, and we would all be stuck in this small room with no light. But it was fun. It was bonding. We shared things together. उस वक्त आपको पता था इंस्टिंक्टिवली कि ये कल्ट क्लासिक बनेगी? नहीं, ये तो नहीं पता था. But when Dibakar came to me, he narrated my role to me, and I felt कि there's something here. You know, because it was a very small role, and he told me also बहुत छोटा सा role है. But there was something about it which made you feel. I think all of us probably felt that when we did join the film, that there was something different about it, you know, which made you feel you want to do it. I have to admit, I'm not very good at choosing, you know, like on a script level, when you read something, it looks very interesting, but you don't know how it will translate. I phoned Anupam ji because I had just done Om Jai Jagdish, and his being attached to the film was a big, you know, Om it Jai gave me a Jagdish lot was of before confidence. Yeah. Yeah, and he was like, no, this is, it's going to be good and all that, and it really helped.
And then, of course, when I met everyone, I was so reassured. But also, I must say, Dibakar and Jaideep were very clear on what they wanted, and they did rigorous auditioning. I remember going for 3 auditions, and my opening scene was on my headstand. I went for 2. You know, and then I was also more convinced because they seemed very sure, and you know, and Savita ji, and so I think everything had been thought out very well. And then, of course, when we were on set, I remember on the first day, I turned and, you know, I have very straight hair. So they spent a long time curling it, which I never fully understood because people used to say, oh, nice natural hair. And all. Then I turned around and I saw Dibakar smile, and I realized I must be playing her because I was suddenly looking like so they had that, you know, they knew. Her name is also That was Meghna. his tribute to his wife. His wife. पर दिवाकर हंसता नहीं था, है ना? बड़ा इंटिमिडेटिंग होता हुआ ना कि अगर वो हंस नहीं रहा तो नहीं, उसकी पहली फिल्म थी, इंटिमिडेटिंग तो नहीं था। डायरेक्टर हंसी नहीं रहा है सीन नहीं, हाँ, क्योंकि कॉमेडी थी पर बहुत सीरियसली करता था। बहुत ही सीरियसली करता था। रणवीर बोलो ना आप। हाँ, अरे सर, Ran, very No, I'm just transported back. take us back to Bunty. Yeah, so one misconception is everybody thinks Bunty was the younger brother. Well, actually in the script he's the older brother. Yeah, actually. So Mary, like Tara said, auditions, even I went preliminary audition, then second audition, then third time they called me to tell me that they are casting me, but they are casting me not because I look the part, but because they like the direction in which I am taking the part. ये बताया मेरे को कि तेरे को इसलिए ले रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ आके ये कुछ और मत करना। So तेरा स्टार स्टेटस की वजह से नहीं, स्टार स्टेटस तो तब कुछ था ही नहीं सर। I was down in the नहीं, dumps that channel time. भी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, कोई स्टार स्टेटस नहीं था वो टाइम पे, but I mean this and but one thing I knew when I finished reading his screenplay, Jaideep's screenplay, I remember closing the last page and feeling like this is the perfect screenplay. Like that feeling was there. And then after the film got shot, my brothers and my late father, I used to tell them, क्योंकि तब रोल्स नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तब ग्रेट लेटर उसो 2004-5 में ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में कर रहा था। Correct. सो फिल्म करियर वो स्टक, कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट फिल्म मेरी शायद थी फ्रीकी चक्रा या जिसमें ऐसे कुछ समथिंग स्मॉल लाइक दैट, एंड आई न्यू दिस फिल्म विल ब्रेक इट फॉर मी, एंड नोइंग दैट इट्स देयर बट इट्स नॉट रिलीजिंग। I think you went off to That was US. very Yeah, in festive. between I went. मुझे याद है, so I'm going to US. And then while I was doing TGICS, and then 2006 Khosla ka Khosla 1 week, and next week Pyar Ke Side Effects. So these two films released a week apart and put me on the map as an actor. So Khosla is you know that, so I was basically saying that knowing that you have something good but audience tak nahi pahunch raha, you know. And now पहला today, सीन मुझे भूलता नहीं है, जो आप आए, मैं टूथब्रश वाला। अनुपम जी, आई एम नॉट जोकिंग, वो अभी भी मैं देखता हूँ ना, आई एम नॉट एक्टिंग इन इट, क्योंकि मेरे उसने इतना मुश्किल कर दिया था जो फिजिकलिटी कि तू उसके ऊपर चढ़ना है, तू ब्रश भी कर रहा है, तूने लाइनें भी याद रखनी है, तूने इधर भी देखना है। मैंने मतलब आई जस्ट बेसिकली जस्ट met marks and delivered lines. Speak about your roomie. Who, Vinay? So Vinay played the travel agent, the one who laughs on Chiranjeev's name. So Vinay and I, by then we had, you know, even Great Indian Comedy Show we were doing together. We had done theatre together. We had done. So when we came on Khosla, it was a nice place for us to be because both of us knew that this is something good. So Vinay would have not done that part also actually. Yeah. He really knew was that very good this film is special, you know. Yeah. Everybody in smaller characters also, they were very good. And you know, Parveen was here in the morning after having had an accident last week. Yeah. So he was also saying that it's that kind of film that it was his first outing, you know. So it's really special for everyone. Yeah. तो सविता जी, आपने इन लोगों को पैसे दिए कि नहीं रोल के लिए? किसी को पैसा मिला था कि नहीं, बताइए जेन्युइनली। One second. सर देख रहे क्या नहीं मिला था क्या? जो बोला था मिला। जो बोला था वो मिला, correct. I want to say one thing about the writing before you speak. जयदीप ने जो स्क्रीन पे लिखी है, I always feel when you turn the page fast, it's always good. लेकिन जब डायलॉग सीखना होता है ना, if you learn the dialogues immediately, something is going well. The dialogues, you learn it fast, means it's all making sense. If you don't learn the dialogues fast, उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कुछ
बैठ नहीं रहा है. Can I add? You know what I mean, छोटा but- छोटा मुंह बड़ी बात. There are such senior actors here, and I'm just trying to say. I think one thing which I have seen with Jaideep, and this is again a compliment to Jaideep's work. I have worked on subsequent scripts with him also. For Right. example, Aja Nachle and maybe one more. I don't remember. One thing I find amazing, something with what you are saying, is his economy of writing. Correct. He will not waste a syllable in his Extra words. नहीं. डायलॉग, यू नो, बिल्कुल कड़क, बिल्कुल, यू नो, उसमें पूरा आपका सब टेक्स्ट भी आ गया, जो कैरेक्टर भी आ गया, टाइम प्लेस सब कुछ. So that's why I consider him one of the best writers Correct. in Hindi Yes, cinema. absolutely. एक जो अपने डायल आपने जिक्र किया सुबह में, सो सिंपल डायलॉग. अच्छा ये जो फलाना प्लॉट अपना असल मतलब अपना है, अच्छा आपका है तो ले लो. दैट इज द डायलॉग दैट डिफाइंस खुराना एंड द फिल्म. हाँ, करेक्ट करेक्ट. Yeah. डिफाइंस इट. वन डायल आपका है, अच्छा ले लो. आपका तो ले लो. आपने बोला भी बहुत अच्छा. हाउ कैन इट गो रॉन्ग? हाँ, Yeah. इट्स द पावर ऑफ द वर्ड. हाँ. So Absolutely. small examples. थोड़ी सी आप बड़ी जब परवीन आता है, जब चेरी आता है, हाँ. वो कहता है, किरण जी कहती हैं उसको पानी तो पीने दो. हाँ. पानी पीना है, पीले 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 पानी. You know what I mean? The rhythm of that. यहाँ आपका मेरा जो था, ये खड़ा है, हाँ. ड्रिंक होल्ड करते हैं, हाँ. बीट शुरू करें जी. Not only that. Amazing. मेरा तो इन्होंने एक बार मैंने कहा था मेरा कुछ ईमेल हैक हो गया तो एक नया एड्रेस बना दिया. आई थिंक वी वर शूटिंग. यू नो व्हाट माय ईमेल एड्रेस वाज? शुरू करें जी या .gmail.com. हाँ. हाँ. But also, I think the concept of land grabbing is so relatable. So the script, no doubt, unbelievable. But recently, we went through a family land issue, small thing, but everybody related to Khosla. Even the so-called baddies on the other side. Eventually, I was doing selfies with them, saying "Khosla ka Khosla," and they were all laughing because everyone loved the film, and it helped even to get to figure. Honestly, I was like a detective. I solved it, and it was because of Khosla ka Khosla. So Achha. also, while it's a satire, while it's a comedy, while it's a serious film, it's also amazing for raising awareness on land grabbing. I'm serious. I just have to say, before the script reached That makes it them, funnier that you're we serious. we spent 2.5 years before जी. in writing and Obviously, तभी developing that. बना कोई हुआ है. बनेगी ना. That's ऐसा नहीं amazing. So I mean, my journey to this is today not 20 years, is more than that Yeah. actually. Belief, you had the belief. You had in the I totally believe in my team. इमेजिन बजट नहीं, कुछ नहीं, सब एक कमरे में बैठे हुए और ऐसी फिल्म बन गई. To be very fair to her, budget was still certain point. Everything went off very well. In the last few days, I think things went a little Yeah. wayward, which can happen with any film. Any film. But especially for a film like this, you know, like हाँ. later it faced the See, same I thing tell for you, distribution also. the right? budget also, because when you make these kind of films, when you come to Bombay and say I have overspent on these kind of films, they were anyway not looking at me very easily. Had it been more budget, तो वो तो देखते ही ना फिल्म, कि ये क्या है, इसमें ये आइटम नंबर नहीं है, इसमें आपने नए डायरेक्टर को ले लिया, आप एक गाना डालिए, आप ये पोस्टर देख के कौन देखने आएगा. गुल्लाहू क्या होता है? This is what they used to tell me, and I used to go back every evening. I used to come in the morning, and I took that stand that I will make sure this get good release. वो बोलते थे रख जाइए, देखेंगे क्या करना है. आई स्टिल रिमेम्बर 15-20 लाख दे देंगे आपको, ऐसा बोल के मुझे. अच्छा? ऐसा बोलते थे वो लोग. और Finally, आपने I पिक्चर know में those कितना people. पैसा बनाया? ये तो बहुत बुद्धि की बात है. बताइए ना कितना बनाया? 15-20 लाख तो बोमन जी नहीं ले लिया होगा. सर हम लोग 5 स्टार होटल में इंटरव्यू कर रहे हैं. आप वो तो अब कर रहे हैं 18 साल बाद. नहीं, मेरा दूसरा एडवर्टाइजिंग का बिजनेस था, ऐसा भी नहीं है कि this was the तांडव फिल्म Tandem film has done Jhund also after हाँ, that. जी, But I'm just saying कि वो ओवर बजट हो जाती है अगर, मैं मानती हूँ कि मैंने सबको बहुत कॉस्ट कटिंग में काम किया, सब कुछ किया, बट एज अ प्रोडक्ट हम सब मिडिल क्लास में बंध गए. चलो पार्ट 2 में तो ऐसा नहीं है ना. पार्ट 2 में तो पैसे मिल रहे हैं ना. नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल. वी ऑल हैव राइट टू टू. में तो डिस्ट्रीब्यूटर Now- पकड़ के गएंगे हमको फिल्म दो ये. Now we've all gone on so Absolutely much about the नहीं है bonding. Now Savita ji will purposely make it like that only. So we're all in one room. एक No तो सीक्वल phone. बना रही है कि नहीं अभी आप? ये बाबा जी ने आज बोला कि ये अगली इंटरव्यू के लिए छोड़ दीजिए. डोंट कंफ्यूज द टू. कंफ्यूज द टू. अच्छा, बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस भी आते हैं, जैसे खोसला जी सडनली उठ जाते हैं, उनको लगता है कि वो अभी टपक गए और लोग उनके फ्यूनरल में आ रहे हैं और लोग गॉसिप कर रहे हैं. Opening of the film. हाँ,
एब्सोल्युटली। तो ऐसा कभी हुआ है रियल लाइफ में, कभी आप कोई फ्यूनरल में गए हैं? क्या यार? हाँ? Said this is not expected of you, यार. Just ask your normal trolling questions, ना. It is the, ट्रोलिंग क्वेश्चन। now what he's trying to say is कि हम आपके जिंदा साथ real रहते हुए life भी में रोज यही come सोचते on. हैं अगर मैं नहीं होगा तो क्या होगा. हाँ. That is the only baseline here. Nothing कि do you go beyond कि funeral में जाते हैं और अपनी लाइफ हम हर कदम में सोचते हैं अगर अचानक से ऐसा हो गया तो फैमिली कौन देखेगा. अच्छा, मतलब आपने जवाब दे दिया. क्या आपने कभी रियल लाइफ में से सोचा है? अभी तुम्हारी वो नहीं मर्जी जानती हुई. ना कि तुम दोनों दोस्त हो इतने. ट्रोलिंग क्वेश्चंस क्या? इफ यू अच्छा. लुक बैक आपके, हाँ हाँ बोलिए ना मैम। नहीं ये बात अच्छी है कि हम बैठे हैं यहाँ पे. हम बैठे हैं. इसी वजह से तो ना मैडम, है ना, और बड़े स्पेशियस जगह में बैठे हुए सब लोग, बिल्कुल. है ना। सर आपके रेpertoire में इतनी सारी फिल्में आपने की, ये कहाँ पे होता है? If I have to list 10 top films of mine, it's certainly there. The top 10. मामन सर? Top 5 and personal favorite. Personal favorite. मैम आप? I think top 5, definitely. Yeah, same for me. I mean, every film is very special. My first director is also sitting there, so every film is very special. Yeah, of you course. know. But yeah, definitely. I would say top 3. Definitely top 5. मुझसे पूछिए. अरे सर मैम बोलिए ना आप। Top 2. टॉप 2। Because I Top cracked the one. national award in first film, so for Yeah. me it was, Yeah. you Big know, thing, so yeah. it was a good that's thing. true. Amazing. बमन सर, जी. when you look back at the entire journey, कभी कभार आप सेंटी हो जाते सोच के कि यार what an iconic film it's become. There are also emotional moments behind the scenes. Were you all ever at one point of time giving up hope and saying ये होगा नहीं होगा, ऐसा हुआ? I don't think we gave up hope ever. Yeah. I don't think so. No. Oh, I think never these two made sure. Yeah. Anupam ji and Boman, both. I remember. I'm forgetting. Regency is the name of the restaurant in Amboli जो मैं भूल गया था. बिल्कुल. वहाँ हम लोग मिलते थे. All of us we used to meet जब अटकी हुई थी picture for release. We used to meet. Regency, yes. Brainstorm. Pool के बाद. Correct. On the corner, ना? हाँ. ब्रेनस्टॉर्म करते थे क्या करें किसको बने. अनुपम जी यूज्ड टू पिच इन, बोमन यूज्ड टू पिच इन, सविता यूज्ड टू बी ऑन एंड ऑफ बिकॉज़ शी लिव्स इन दिल्ली, दिबाकर, जयदीप, Vinay, all of us used to meet regularly. But I remember calling Dibakar and Jaideep on occasions and just saying what's happening, and Savita ji, and when they would at one point say no news yet, I मैं felt एक to और be बात honest बोलूंगी that यहाँ पे as- एज अ प्रोड्यूसर दैट टाइम मेरे पे सबसे ज्यादा प्रेशर था Yeah. कि तुम ज्यादा लालची तो नहीं हो रही हो कि पैसा बनाने के चक्कर में तुम रिलीज नहीं कर रही हो. और गलत, और जो मैं सुन के आती थी वो इतना अपोजिट होता था जो डिस्ट्रीब्यूटर से सुनती थी. पर उसमें ये था कि आप रख जाइए और ये पेपर साइन कीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए पूरी फिल्म. अब मैं कैसे हैंड ओवर कर दूं? अब मुझे ये सुनने को मिलता था, अरे भाई तुमने मुगले आजम नहीं बनाई है, तुम दे दो जो वो कहते हैं, दे दो जो को वो भी कहते 10 साल लगे थे रिलीज होने में. हैं. हाँ, तो मैंने कहा मैं ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ. सो लकीली आई नेवर हैंड ओवर माई कॉपीराइट ऑफ not even music, not even film till today. But there's no doubt about it. Anupam ji fought for it. Boman, all Everybody. of us, we pitched in. But the unsung hero of Khosla Ka Ghosla, no doubt, is सविता जी। Yeah. Because that's what Dibakar, Yeah. Jaideep, everybody has got the credit due. Anupam ji, Boman, all of us have walked away with something. But the unsung hero of this film is her. Yeah, and that's what I was saying is that honestly, for actors, at the end of the day, how much ever you're invested in the film, it is one film, and then you're doing other films, you know. But I remember for Savita ji, and at that time, I remember Dibakar said to me, "I'm not going to make another film till it releases," and I don't think he did. So I do think that Sorry, I didn't get he that. had said to me on the phone then that I won't make another film till it releases, and I don't think he did. I don't remember, but my point is No, that the we've next all he made was Oye Lucky, which is after it released. so Yeah. we've all been in films. I've been in But I think the still there people were 2-3 also films that waiting have for not it to get released. released. Amaras with the Coco, Neena success ji of and all. Khosla opened the door for an Oye Lucky Oye to be made, na? Because it was in the same milieu. And so many other movies Yeah. that got हिम्मत जितनी भी आई. फिल्में दिल्ली में बनती हैं, यूपी में Correct. बनती हैं, वो सब खोसला इज द फ्लैग बेयरर. Benchmark. हाँ. Yeah, this broke ground, na?
Khosla was the one which broke ground of these Delhi-centric films, small-town-centric films. That now it's become a template. हाँ Maybe not a bad time to think of Naveen ji. हाँ Yeah, absolutely. He's another. Oh, yes. He did a great job. Great. Nitesh Pandey sir as well. Nitesh, वही तो मैं बता रहा था. Nitesh is his right hand man. Everyone, even Rajesh. Rajesh Sharma. Even Munjal. I mean, Munjal, who- Munjal. Munjal, yeah. Munjal was. बड़े अच्छे छोटे लोगों की कंपनी. He was bending to say them छोटे लोग चले गए. It was so good, yeah. No, I still have the footage. I was just watching yesterday हाँ. where he and you are sitting in the room and you are saying dialogues and he's correcting to you and you say, "Shut up, मैं ठीक बोल रहा था, तू गलत बोल रहा है." I But struggled. इसके तो I had to, outtakes will be priceless. I have those. and now on social media. At that time there was no I'm, social media, so now इसका it will be like. outtakes या ही- होने चाहिए पता नहीं कहाँ वही होंगे I- ऐसे थोड़ी निकालेंगी. आउटटेक्स वाकई कमाल के होंगे ऐसे थोड़ी निकालेंगी वो तो प्रोमो में देखा नहीं आपको 3 सेकंड से ज्यादा फुटेज नहीं जाती वो मुझे समझ नहीं आई बस क्यों ऐसा कुछ नहीं है. मतलब I don't understand. Because अरे शी सेंडिंग She didn't send you the promo. footages of 10 seconds 7 seconds Not even 10, No, 3 seconds, 4 seconds. those are memes. These are not reels even, not promos. ताकि ज्यादा पब्लिक ना हो फुटेज चाहिए मेरे से आगे खरीदो ना मैं हूँ ना यार ओह अच्छा कुछ सीखना पड़ेगा सब. अरे सर ये सब She runs an advertising agency. आप मुझे ट्रोलिंग एक्सपर्ट बोलते हैं, आप तो मैम को ट्रोलिंग कर रहे हैं अभी. नहीं आपको ट्रोलिंग एक्सपर्ट इस इंटरव्यू के बिना पे नहीं बोलता हूँ जो पहले की हुई है यहाँ पे तो आप बहुत गुड बॉय बन रहे हैं क्योंकि अनुपम जी बैठे हैं बमन जी बैठे हैं किरण जी बैठी हैं नहीं, I want to learn. Trolling कैसे करते हैं? सर ये अरे यार अच्छा जाने से पहले मैं जानता हूँ कि आप लोग तो अक्सर मिलते हैं एवरी 2 days इन योर हाउस बट इफ देयर इज वन थिंग यू जेन्युइनली वांट टू से टू एनी वन ऑफ देम फ्रॉम द हार्ट 18 years हो चुके हैं मे बी एज अ फ्रेंड एज अ कलीग वो क्या होगा तारा Oh my God, you're looking और straight at दिल me. I से, was दिल going to से. say I'll speak last. I didn't expect it, but I kind of did. But the minute I walked in this morning, I happened to walk in also with Cherry, and we walked in and we were in a lobby of a hotel that looked spookily like the first hotel in Delhi, and we couldn't find anyone. So we were like, is it happening? Do we know? Is it on? And honestly, it was the sentiment of how we even started when we made the film, because it was an unknown quantity. But the second we walked in, the warmth is palpable. And I think that to me is really special. Whether we meet, don't meet, whatever, it's literally like a family. And that's really very touching. And one other thing, 18 years have gone by, although we all look the same. For me, my kids are now 15 and 13. The fact that I can watch this film with them and they laugh and I'm not shy or anything, to me is a big thing. Because most things I do now, they say are cringe. So this is a really big compliment. क्योंकि आप अभी मम्मी हैं, आप सीनियर खोसला से रिलेट कर पाती है अब ज्यादा? बिल्कुल. I think also we relate. I feel like I've had more life experience, so just relate with lots of things. And I don't start winking at Ranveer. अरे and वो all. मुझे I यार know it. बदमाश है वो. किरण जी आप बोलिए ना. It's a reminder every time I see it, and I remember those lovely days. Like I said, I think adversities and difficulties in life always bring people together. You unite, against the forces. And I think that's what happened in Khosla Ka Khosla, which was the most beautiful thing. Experience, which now we very rarely experience. Everybody's in there, man. We never, I don't know, I think most of us have not done those low budget films now in the recent past. So I think we missed out. All right. So there's one guy, but I missed out on that experience, believe me. And I think it's a lovely experience. रणवीर. No, if I would, like you said, want to say something to everybody who's here, I will just say I love you guys from the bottom of my heart. Same here. It's Same page. Khosla Ka Khosla is actually the film that put me on the map as an actor, and just the lessons that I learned while making of this film, I really cherish every second of that hardship ho, reward ho, jo bhi ho. I feel like a never-ending bond with these guys. So, love. I want to say, Same and this is not a sentimental thing, I want to say thank you for being in my life. They really make life so beautiful, life so rich. This is what this film has also given us a relationship for lifetime. Yeah. ऐसा बहुत कम फिल्मों में होता है.
बहुत कम फिल्मों में, मैंने इतनी फिल्में की हैं, बहुत हमारे नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, बिकॉज हम एक फिल्म में 1 महीने 2 महीने के लिए काम करते हैं, Yeah. तो अच्छे हैं लोग, बड़े अच्छे हैं, 90% 95% लोग अच्छे ही हैं और वो रिश्ते बनाए रहते हैं। मगर जो इस फिल्म में हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ बनी है ना, दैट इज़ आवर रिलेशनशिप। I mean, today we are here together after so many years, but I don't feel that. I almost feel like I've been connected with everyone here forever. Yeah. And that's And an it's amazing every feeling. time like I normally I bump into Yeah. Kiran ji only Yeah, at yeah. award shows. Yeah, yeah. But Well, we I've do. seen this Yes, or at a yes. party, but I always feel the same Yeah. warmth and love Yeah. that I carry. Yes. मोमन सर, 2 things I'll say. One is in the hardship, जैसे मैंने पहले भी बताया कि when Divakar's mother-in-law passed away, we didn't know. अब क्या होगा? एक तो बजट कम है, 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे. He had to go somewhere. We stuck together, and that's the reason. Because of hardship, we are stuck together today. And number 2, you all have stolen all the lines how we love each other. It's fine, no problem. I'll say something to young writers and directors. That you don't need a big budget to make a great film. वाओ, You need to have a thought, and you need to have a solid script. Work on the script, and no matter how long it takes, it will be made, and it will be remembered forever. So work on your scripts. Don't try and become famous overnight. Don't try and become famous overnight. Work on your script, and work on themes that are relatable to humanity. And this is what this film is about. It's relatable to humanity. So it's a great lesson for young directors who say, I want special effects. No, you don't need special effects to make a great film. You need a special story, nothing else. वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। सविता जी, ये कहेंगी कि मेरी जो पार्ट 2 में है थोड़े कम में कर लेना फिल्म, वो हम नहीं सुनने वाले, वो हम नहीं सुनने वाले हैं, नहीं, मैं वो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं कहूंगी। नहीं, ऐसे मैं कह ये रहा हूँ। कहूंगी कि सबको ऐसे ब्लैंक चेक भर लो जो चाहिए। हेलो आजकल चेक नहीं नीचे। देते। और फार बाउंस एक सबको मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि I think I was lucky to have this kind of a team जी। and the fight which I've done now with Khosla. At least now that is become such a large and strong strength and brand for me as a company also. I have learned I've gone through hell for this film, but then learned a lot. Today, if you tell me or try to bully me, I don't think anyone can do that in this industry. Nobody could bully you then also. खुराना साहिबा, खुराना साहिबा, ये पार्ट 2 का डायलॉग है. Don't try to bully me. लेडी खुराना। 2006 में मैंने ये फिल्म देखी थी एज अ बैचलर। अब मैं जाके देखूंगा अपनी बीवी और बच्चों के साथ, Please. थिएटर में भी, and I'm very proud of each one of you. And the fact that not only are you great performers, but you're great human beings as well. Yes. I love you from the bottom of my heart. I love my बार देखो, 1000 बार Gloria. यहाँ देखो। नहीं कर रहा, आप तीनों इसलिए ट्रोल नहीं कर रहा है। senior citizen. Thank I you. have never enjoyed promotional interviews as much as this. You can be sure this is going to be cut into a reel and on his account all the time.